Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Now, let's discuss the gene mutation. We already discussed about the chromosomal mutation. These are the mutation which happens into the chromosomes and they change their structure and numbers. अब हम बात कर रहे हैं gene mutation की. This is the mutation which happens into a single gene. एक जीन में होने वाला म्यूटेशन जो है ये कहलाएगा जीन म्यूटेशन एंड ड्यू टू दिस जीन म्यूटेशन द अल्ट्रेशन कैन बी हैपन. यहाँ पे पूरा का पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाता है डीएनए का, जिसकी वजह से कुछ चेंजेस मिलेंगे, कुछ डिटेक्टेबल चेंजेस यहाँ पे दिखाई देंगे, क्योंकि जब जीन्स में चेंजेस हो रहे हैं इट विल चेंज द प्रोटीन दैट इज फॉर्म्ड बाय द that particular gene that coded by this particular gene, so it will be changes. I want to say one thing, that mutation is a process where the changes happens and in most of the cases mutations are the lethal, यानी कि कोई ना कोई हार्मफुल इफेक्ट ही क्रिएट होता है म्यूटेशन की वजह से. इन द सम केसेस वेयर द म्यूटेशंस आर न्यूट्रल, जहाँ पे कोई चेंजेस भी नहीं होगा, कुछ ऐसे म्यूटेशन भी होते हैं. तो हम बात करते हैं जीन म्यूटेशन की. जीन म्यूटेशन में अगर हम बात करें दैट फर्स्ट टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन इज पॉइंट म्यूटेशन. Point mutation. This is the mutation where the changes occur at a single point of the gene, single base pair पे या single nucleotide पे जहाँ हमें changes देखने को मिल रहे हैं, उस mutation को हम बोलेंगे point mutation. This point mutation is very well can be very well explained by an example, that is sickle cell anemia. इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. अगर पॉइंट म्यूटेशन एक्सप्लेन करना है तो हम इसके लिए एग्जांपल लेंगे सिकल सेल एनीमिया का. दैट इज द result of the point mutation. Sickle cell anemia is a disease where an abnormal hemoglobin is formed and this is due to the point mutation. In the normal situation, when the normal hemoglobin is formed, we know at the 6th position of hemoglobin, beta chain of hemoglobin, the amino acid that is glutamic acid is found. Amino acid glutamic acid is found at 6th position of beta chain of hemoglobin, and this glutamic acid is coded by a codon that is GAG. GAG एक कोडोन है जो कि ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है. Codon, we will study about this codon into our next chapter also. Codon is a triplet form. यहाँ पे 3 ये नाइट्रोजनस बेस एक फॉर्म करते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं, दैट इज नॉन एज कोडोन एंड ईच कोडोन कोड फॉर अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड. हर एक कोडोन एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करता है. 64 codons are found which code for different amino acids that we will discuss in our next chapter. So this is a codon GAG which is coding glutamic acid, which found at the 6th position of beta hemoglobin in normal situation. But due to the point mutation होता है and due to this point mutation, at this point this situation, this position gets changed. यहाँ पे changes होंगे and now the codon that will form it will be GUG कोडोन जो है वो बन जाता है in place of GAG. So earlier that GAG is found at that position and it coding glutamic acid, but when point mutation happens it changed from GAG to GUG, and now this GUG will code for another type of amino acid, that is valine amino acid, and this change, that formation of this valine amino acid, it forms a defaulted hemoglobin which causes the disease sickle cell anemia. So this is the example of point mutation where the changes is occur at a single point. That's why we are calling it point mutation. एक single base pair पे जहाँ change हो रहा है, single nucleotide पे change हो रहा है, इस वजह से इसे हम कह रहे हैं point mutation. Second type of gene mutation that we can study here, that is फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. अब हम बात करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की. फ्रेम शिफ्ट जैसे कि नाम से पता चल रहा है दैट हियर द कंप्लीट फ्रेमिंग इज गेट चेंज, फ्रेम चेंज हो रहा है. इसे स्टडी करने के लिए जस्ट टेक एन एग्जांपल. हम एक यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहे हैं. आई एम राइटिंग वन स्टेटमेंट हियर, राम हैज रेड कैप. अगेन I have written a sentence. एक सेंटेंस हमने लिखा है, नॉर्मल सा सेंटेंस है, राम हैज रेड कैप. बट यहाँ पे जितने भी हमने वर्ड्स लिखे हैं, these words contain 3 letters. 3 letters contain कर रहा है हर एक वर्ड. That is similar to this codon. इन्हें हमने रिप्रेजेंट किया है इन कोडोन की फॉर्म में.
these three nitrogenous bases which are representing a codon. एक codon को represent कर रहे हैं. This is a combination of these codon. This is one codon, this is another codon, and this one is also, and this one also, and all these codons will code for particular amino acid. So let's see what happens during frame shift mutation. Frame shift mutation can be happen due to the deletion or insertion. या तो यहाँ पे कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड या तो डिलीट होगा या फिर या नाइट्रोजनस बेस या तो नाइट्रोजनस बेस गेट बी डिलीटेड और इंसर्टेड. So frame shift mutation can be happen due to the insertion or deletion. Insertion या फिर deletion की वजह से होगा frame shift mutation. अब देखते हैं कैसे. पहले हम बात करते हैं insertion. Suppose one more nitrogenous bases get added due to the mutation. एक नया nitrogenous base यहाँ पे add हो गया है. Suppose we are adding one A here. एक नया नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे ऐड हो रहा है म्यूटेशन की वजह से. नाउ दिस फ्रेम गेट्स चेंज्ड. अब जो है फ्रेम चेंज हो जाएगा. फ्रेम हमेशा 3 कोडोन की फॉर्म में ही रहेगा. अब एक नया चेंज ऐड यहाँ पे हो रहा है तो चेंजेस होंगे. लाइक दिस राम इट विल रिमेन सेम क्योंकि 3 नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे कंप्लीट हो गए. दिस कोडोन विल रिमेन एज इट इज. द चेंजेस विल कम्स फ्रॉम दिस वे. इट विल बिकम अ न्यू कोडोन AHA. इट विल बिकम अ न्यू कोडोन. एंड आगे ऑल्सो यहाँ पे आगे भी फिर चेंज होंगे. दैट विल चेंज SRE. इट विल बिकम अनदर कोडोन एंड द अनदर चेंजेस विल हैपन ऑल्सो BCA एंड दिस P विल रिमेन अलोन. ये अकेला रहेगा. इट विल नॉट फॉर्म एन कोडोन एंड विल नॉट फॉर्म एनी अमाइनो एसिड. सो हियर वी कैन से they can see that here the complete frame is get changed. पहले फ्रेम था Ram has red cap but now it becomes Ram then AHA SRE and BCA. कोई मतलब नहीं है इस चीज का. तो जब कंप्लीट फ्रेम चेंज हो गया है तो कोई ना कोई यहाँ पे अल्ट्रेशन होगी. चेंज अमाइनो एसिड्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें चेंजेस आएंगे एंड इट विल फॉर्म अ हार्मफुल इफेक्ट इनटू द ऑर्गेनिज्म. जहाँ पे भी म्यूटेशन होगा कोई ना कोई हार्मफुल इफेक्ट्स, हार्मफुल प्रोटीन फॉर्मेशन होगा. कुछ डिफेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे ड्यू टू चेंजिंग ऑफ दीज फ्रेम्स. This is the frame shift due to the insertion. In the same way, we can say that this frame can be shifted due to deletion also. Deletion भी हो सकता है. तो इसी एक बार हम फिर से नॉर्मल कंडीशन पे लाते हैं. This is our normal situation. ये हमारी नॉर्मल सिचुएशन थी. Ram has red cap. This is our normal situation. Now let's see if any nitrogenous base is get deleted from here. कोई nitrogenous base यहाँ से delete हो गया. Suppose we are deleting this H from here. एक H को यहाँ से हमने डिलीट कर दिया. सो अब हमारा फ्रेम क्या बनेगा? RAM. इट विल रिमेन सेम. नाउ हियर ASR then EBC and then ALP. It will remain. It will not forming any codon. So here we can also see earlier here that frame was the has HAS but now it becomes ASR. So it gets changed and earlier frame is also get changed. So here we can see that due to the insertion or deletion of any nitrogenous base, their complete frame is get changed and this changes will occur due to the mutation and it will create an harmful effect. It will alter the protein synthesis that will be under the control of these nitrogenous bases. ये जो भी कोडोन थे, ये जो भी अमाइनो एसिड फॉर्म कर रहे थे, जो प्रोटीन इन्हें बनाना था, अब ये वो नॉर्मल प्रोटीन नहीं बना पाएंगे due to this mutation. So this type of mutation is known as frame shift mutation. Here, let's see one more type of classification of mutation on the basis of the product form. तो हम देखते हैं एक और तरीके का म्यूटेशन यहाँ उस बेसिस पे कि किस तरीके के प्रोडक्ट म्यूटेशन से फॉर्म हो रहे हैं. So it's on the basis of product formed. So here we have taken 3 types. First type of mutation which is known as same sense mutation. This is the mutation. Let's take a look that GAG, that is the same example we are taking. GAG, it's codon which codes for glutamic acid. We know it's code for glutamic acid. So due to the mutation, when it's convert into the GCG, it will convert into the GCG due to the mutation. Again, due to mutation also it will code for glutamic acid. So there no change occur after mutation. This type of mutation is known as same sense mutation. Second type of mutation is the antisense mutation.
Here, this is the same example that we studied into the sickle cell anemia, that glutamic acid is now converted into the valine due to the mutation. The third type of mutation is a nonsense mutation. This is the mutation in which, let's see what happens, same GAG that is coding for glutamic acid, we know it's called for glutamic acid. But here, the mutation occur at single nitrogenous base, कहाँ यहाँ change हो रहा है, suppose this G and this G get changed into the U. G जो है change हो गया है U के अंदर, and due to this mutation, the codon become UAG. UAG, and this UAG codon code for not any amino acid. It's do not code for any amino acids. It's code for a stop codon or nonsense codon. कुछ codon ऐसे होते हैं which do not code for any amino acids, and these codons are known as stop codons or nonsense codon. So इस type का mutation जिसके अंदर mutation की वजह से कोई एक कोडोन एक ऐसे कोडोन में कन्वर्ट हो जाता है जो nonsense codon हो या stop codon हो, then mutation is known as nonsense mutation. So this is all about the different types of mutation.